Hello everyone. Today in this class I am going to talk about the exercise 7.2 for the class 9th standard from our NCERT syllabus. And about the introduction video of this exercise we have already discussed in the last video. Now I am going to start from the very first question or the beginning question for the exercise 7.2. And our first question is statement of the given question. In any triangle ABC or an isosceles triangle ABC, two sides AB and AC are equal. Clear? A triangle is given ABC which is isosceles triangle, and in this triangle two sides AB and AC, these are equal to each other. Bisectors of angle B and angle C. Bisectors of angle B and angle C. It means these both angles are equal and these both angles are equal. Clearly देखो जो चीजें हम एक्सप्लेन कर दूंगा. Both are intersecting at point O. Clear? It is also given that the bisector of angle B and angle C are intersecting at point O. Then prove that BO is equals to OC and AO is the angle bisector of angle A. मीन्स हमें यहाँ पे टू थिंग्स प्रूव करनी है, जो कि है हमें पहला तो ये प्रूव करना है OB एंड OC आर इक्वल टू ईच अदर, एंड सेकेंड थिंग हमें जो प्रूव करनी है वो ये है कि AO जो है वो एंगल A को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो द क्वेश्चन again I am repeating, in an isosceles triangle AB and AC are equal and the bisector of angle B and angle C are intersecting each other at point O, then prove that BO is equals to CO and AO is the bisector of angle A. क्लियर है? ये अपना स्टेटमेंट रहा क्वेश्चन का. अब हमें जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी हमें दे रखा है वो मेंशन करता हूं. गिवन दैट इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC and BO comma CO are angle bisectors of angle B and angle C. Clear? A triangle is given ABC in which AB and AC are equal, and one more thing is given, BO and CO are the angle bisector of angle B and C respectively. Now what we have to prove? हमें प्रूव करना है फर्स्ट थिंग BO is equals to CO and second thing AO is an angle bisector of एंगल ए. तो एंगल ए का बाइसेक्टर प्रूव करना है तो हमें मीन्स ये प्रूव करना है एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल CAO. यदि ये केस पॉसिबल होगा तो हम डायरेक्टली ये बोल देंगे कि ये क्या आपका एक एंगल बाइसेक्टर. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट. हाउ विल वी प्रूव इट? प्रूफ. First of all, according to our mind strategy, we will try to select these both the triangles because these two sides and equal relation, equate relation exist in this triangle and this triangle, and we will try to prove these two triangles are congruent, and using the CPCT criteria we will say that BO is equals to CO. But for this particular question it is a wrong method because if we will select this one and this one, both these two triangles, then AB and AC are equal. It is given. Clear है? Second thing, OA is equal to OA in both the triangle because it is the common side for these both the triangles. And next thing, this angle is equals to this. Let's suppose these both the angles are equal because this is a triangle which is isosceles triangle, and in this isosceles triangle the opposite angle of the equal sides will be equal to each other. It means angle B will be equals to angle C, and the half, let's suppose this is the angle 50 degree, then it is must be equal to 50 degree, and these both are the bisector. This is the bisector of this angle B.
If the entire angle is equal to 50 degree, then these both the parts are equal to 25 and 25 degrees. So it is 25. Similarly, this is also 25. Then these two angles are equal. So ASS, we can't use this type of the criteria because this type of the criteria I did not explain in the previous introduction videos. So what we have to do now? Now what we will do, now I am going to select this one triangle from triangle OBC. थोड़ा रिपीटली बोला हूं मैंने पीछे के स्टेटमेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आप समझ जाओगे थोड़ा सा। एक बार यदि समझ में नहीं आए तो वापस वीडियो को रिवाइंड करें एंड देन चेक इट अगेन, लिसन इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन ट्रायंगल ओबीसी, या फिर डायरेक्टली बोलता हूं यहां से, इफ AB is equals to AC, then angle B is equals to angle C. Got it? Angle B is equals to angle C. Opposite angle of the equal sides will be equal to each other. So from here we have mentioned one thing, angle B is equals to angle C. Now I am dividing this equation by 2. रीजन क्या रहेगा एक्सप्लेन करता हूं। एंगल B अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एंगल C अपॉन 2. I didn't do anything special because we can apply the same operation in both the side, either side of the equal symbol. आप दोनों साइड में सेम डिजिट ऐड कर सकते हैं, सेम डिजिट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम डिजिट से इनटू कर सकते हैं और सेम डिजिट से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है बात यहां तक? हाफ ऑफ एंगल B का मीन्स होता है, देखो एंगल OBC, ये कंप्लीट B है तो ये इसका हाफ हो गया, देन एंगल OBC, एंगल OBC इज इक्वल्स टू, एंड हाफ ऑफ C इज एंगल OCB, एंगल OCB। क्लियर है? अब देखो ये दोनों एंगल, दीज बोथ द एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल OBC, और किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल, इट मींस इट कंपल्सरी, it is necessary that the triangle is an isosceles triangle. Therefore triangle OBC is an isosceles triangle. Are you agree with it? अब ये देखो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा? ट्रायंगल OBC। तो इसमें कोई दो साइड इक्वल होंगी, कौन सी दो साइड होंगी? मैं अभी रिसेंटली जो अपन ने थ्योरम 7.3 डिस्कस किया था वो थ्योरम यूज लूंगा यहाँ पे। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो आज ये दोनों इक्वल एंगल है, इनके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, इट मींस OB इज इक्वल्स टू OC। बात समझ में आई? यहां तक रीजन लिखता हूं यहां पे, देन अपोजिट साइड्स इक्वल एंगल्स आर equal. This is the perfect reason to behind for OB is equals to OC. First thing we have proved. I hope so you understood. Now for the second thing, AO is the angle bisector. अब देखो AO कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी है, तो मैं ये दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं। अगेन फ्रॉम triangle AOB and triangle AOC, from triangle AOB and triangle AOC, compare these both the triangles. AB is equals to AC. Clear? AB is equals to AC, it is given thing. Second thing, AO is equals to AO, which is common. AO is equals to AO. This is common side. And last and final, BO is equals to CO. This one we have proved. BO is equals to CO. It is proved. All these are, this is side, this is side, this is side. So SSS criteria. Triangle AOB is congruent to
AO किसके इक्वल है? AO इज इक्वल्स टू AO, तो डेफिनेटली या तो AO आएगा यहां पे या OA आएगा। ठीक है यहां तक। एंड देन AO कंप्लीट हुआ, AOB, OB किसके इक्वल है? OB इक्वल टू OC या CO। तो ये OB ऐसे तो हो नहीं सकता, इस दोनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तो ये बनेगा AOB, ट्रायंगल AOB। क्लियर है? देन बाय CPCT एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। एंगल A का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एंगल B, इस ट्रायंगल का एंगल A ये है और इस ट्रायंगल का एंगल A ये है, तो इस मीन्स एंगल BAO एंगल, देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, और triangle AO is an angle bisector of triangle A। क्लियर है यहां तक? तो ये अपना कंप्लीट प्रोसेस हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो कि एक्सरसाइज 7.2 से बिलोंग करता है। आई होप सो यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप, एंड यू विल ट्राई टू मेक प्रैक्टिस on this question, so please pause the video and note it down. Now second question I am going to start. Second question अपने पास क्या है? In a triangle, it is given that in a triangle, second question is this is the second question. In a triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC। क्लियर बात यहां तक? क्या दे रखा है? In a triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC, that prove that ABC is an isosceles triangle। क्लियर है? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं। वी कैन प्रूव ए ट्रायंगल इज आइसोसेलेस इफ two sides are equal, one thing is this, and second, two angles are equal. So in two manners we can prove a triangle is isosceles triangle। तो अपन यहाँ पे यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे, या तो कोई दो साइड इक्वल हो जाए, क्लियर है यहाँ तक, या फिर कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के, कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC के इक्वल हो जाए, तो हम ये बोल पाएंगे कि ये ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो लेट्स स्टार्ट, हाउ विल वी सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन दैट in triangle ABC, AD is a perpendicular bisector of BC। It means these are equal to 90 degree and BD is equals to DC। तो अपनी यहां से बोल सकते हैं, चलो ये डायरेक्टली लिख देंगे अपन। चलो ये आप मेंशन करना चाहो तो लिख दो, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड सेकेंड थिंग BD इज इक्वल्स टू DC। दिस मीन इट इज परपेंडिकुलर एंड दिस मीन बाइसेक्टर। सो व्हेन वी विल add these both, it will become perpendicular and bisector। given that ये हुआ to prove triangle ABC is an isosceles triangle। got it? Now I am starting the proof of this one question। रिपीट करता हूं, देखो बिगिनिंग से हम एक ये दे रखा था, एक ट्रायंगल ABC जिसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एज आई मेंशन्ड हियर, इन ट्रायंगल ABC, AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, देन एंगल ADB एंड एंगल ADC, ADB एंड एंगल ADC बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, एंड फॉर द बाइसेक्टिंग पोर्शन वी कैन से दैट BC इज इक्वल्स टू CD। क्लियर? और हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बेसिकली देखो, हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है तो हम ऐसी ही कोशिश करेंगे, आइसोसेलेस का ही डायग्राम आप ड्रॉ करने की ट्राई करें। अब प्रूफ पे बात करते हैं, तो वन बाय वन आई एम सेलेक्टिंग बोथ ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग द ट्रायंगल ADB एंड आफ्टर इट आई एम सेलेक्टिंग द ट्रायंगल ADC। अगेन आई एम रिपीटिंग,
from the triangle ADB and triangle ADC. Why I am using these both the triangle? Because I am trying to prove that these both the triangles are congruent. So to prove the congruency, we need three things which are equal in both the triangles to each other. So AD is common in both the triangle. It is directly, we can watch it and observe for these two sides. BD and DC both are equal in these both the triangles, and these two angles are also equal because these are equal to 90 degree. So the angle exists between these two sides. So in this we can use the criteria SAS criteria of congruency. Are you getting my point? So from triangle ADB and triangle ADC, AD is equals to AD. AD is equals to AD because it is common in both triangles. Clear? AD is equals to AD because it is common in both the triangles. BD is equals to CD. BD is equals to CD because this is given. Where it is given? Here. BD is equals to CD or DC, doesn't matter about it. We can change the order of these letters क्योंकि लाइन सेगमेंट है. CD बोल दो, DC बोल दो, मैटर सेम ही रहेगा. एंड एंगल ADB is equals to angle ADC which is equals to 90 degree and this one is also given. यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो राइट RHS क्राइटेरिया अप्लाई मत कर देना बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है. क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखो SAS क्राइटेरिया, ये बात समझ में आ गई होगी. SSQ यूज में लिया है, साइड देन एंगल देन साइड. SAS क्राइटेरिया. ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC. अब सॉरी, triangle ADB is congruent to AD is equals to AD. So we can use two things. First is AD और second is DA. क्लियर है? अब AD यूज ले या फिर DA यूज ले, ये बेस्ट होगा आपके DB पे. तो DB किसके इक्वल है? CD के. तो लास्ट में C आएगा. तो AC आ रहा है यहाँ पे लेकिन ये CD के इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला यूज होगा ट्राइंगल ADC. आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखो बाई CPCT, इनमें ट्रायंगल की कौन सी दो साइड है? AB भी एक उस ट्रायंगल ABC की साइड है और AC भी ट्रायंगल की साइड है. बाई CPCT AB इज इक्वल्स टू AC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस triangle and that one we have to prove. क्लियर है बात यहाँ तक? ये अपना आज का लेक्चर रहा एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो.